Hello everyone. Today I will explain you the next act, important act that is related to the water pollution control. And the title of this act is Water Prevention and Control of Pollution Act. This act was enacted in 1974. 1974 में इस एक्ट को बनाया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था. Now, in this act there are 8 chapters and 64 sections. So it is very difficult to go through all the chapters of this act. So today I will brief you about this act with some simple points. So first of all, you should know what are the objectives of this act. So here I have mentioned on this board 3 main objectives of this act. First is the prevention and control of water pollution. So first objective or the objective of this act is to prevent and control the water pollution. Now this water pollution, prevention and control of water pollution. Now this water pollution is maybe related to surface water body or underground water body. It means that it covers all type of water pollution related to all type of water bodies. Second objective of this act is maintain and restore the wholesomeness of water bodies, aquatic water bodies. क्या मतलब इस पॉइंट को थोड़ा सा समझेंगे. Maintain means those water bodies which we are having. So first is to maintain the quality of water. Second, restoring means if quality is deteriorated or quality is not as per the natural conditions, so how we can restore that particular water, quality of that water. So this is the second objective of this act. Third objective is establishment of boards for the control of water pollution. Now the question is that what are these boards? These boards are of, again we can broadly divided into 2 categories. First is Central Pollution Control Board, जिसको हम CPC भी बोलते हैं, that is Central Pollution Control Board. And second is SPCB means State Pollution Control Board. So उन boards को establish करने का जो objective है, that is comes under Water Pollution Control Act. Now these are 3 main objective of this act. Now the question is that what are salient features or main features and provisions of this act, what it covers. So here on this board I have mentioned 6 main points related to this act. इस act से related 6 main points मैंने यहाँ पे mention किए हैं. Otherwise काफी broad है ये act, काफी broad है. जैसा कि मैंने पहले आपके साथ share किया कि it has 8 chapters and 64 sections. So it is very difficult for me to explain all the chapters and all the sections here in this short video. So I am just explaining some main points related to the Water Pollution Control or Water Prevention and Control of Water Pollution Act 1974. So first point here is it defines water pollution related terms. ये जो एक्ट है वो डिफाइन करता है वाटर पोल्यूशन रिलेटेड टर्म्स. फॉर एग्जांपल, व्हाट इज वाटर पोल्यूशन, व्हाट आर वाटर पोल्यूटेंट्स, व्हाट इज एफ्लुएंट, व्हाट इज सीवेज. जो भी इस तरह की टर्म्स हैं, सीवेज क्या होता है, एफ्लुएंट क्या होता है, वाटर बॉडी क्या है, तो सभी चीजें इस एक्ट के अंदर एक्सप्लेन की गई हैं, डिफाइन की गई हैं. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड इज द मेंटेनेंस एंड रिस्टोरेशन ऑफ क्वालिटी ऑफ ऑल टाइप ऑफ वाटर बॉडीज. जैसा कि मैंने ऑब्जेक्टिव्स में भी आपके साथ शेयर किया. तो सेकंड मेन फीचर इज द मेंटेनेंस एंड रिस्टोरिंग जितने भी वाटर बॉडीज हैं, आइदर सरफेस और अंडरग्राउंड वाटर बॉडीज. सरफेस वाटर बॉडीज का एग्जांपल हम ले सकते हैं रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, स्ट्रीम्स एंड अंडरग्राउंड वाटर बॉडीज. तो सभी वाटर बॉडीज की वाटर क्वालिटी को मेंटेन करना और रिस्टोर करना. अब इसको कर कैसे पाएंगे, हु विल इंप्लीमेंट. So for this, two bodies are there.
I have mentioned here establishment of boards. First is CPCB. CPCB means Central Pollution Control Board, that is in New Delhi. And second is SPCB, State Pollution Control Board. State Pollution Control Board is generally situated in the capital of every state. हर स्टेट की कैपिटल में एक स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है. तो जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जो वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इंप्लीमेंट किए जाते हैं, तो दैट इज बाय दीज टू बोर्ड्स, सीपीसीबी एंड बाय द एसपीसीबी. सो दिस इज द थर्ड पॉइंट रिलेटेड टू दिस एक्ट. नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड्स assigns powers and functions to the boards. अब ये जो आपके बोर्ड्स होंगे सीपीसीबी और एसपीसीबी, इनकी क्या पावर्स होंगी, क्या इनके फंक्शंस होंगे, दैट आर क्लियरली मेंशन्ड अंडर दिस एक्ट. सभी के सभी इस एक्ट के अंदर मेंशन किए गए हैं. सो दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर मी हियर टू एक्सप्लेन ऑल द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द एसपीसीबी एंड सीपीसीबी. सो इन द सेपरेट वीडियो, एक अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगा व्हाट आर द फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ दीज बोर्ड्स. क्या क्या इनकी फंक्शंस हैं, क्या क्या इनके पावर्स हैं. सो दिस इज द फोर्थ पॉइंट, पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ दीज बोर्ड्स. फिफ्थ पॉइंट इज इट प्रोहिबिट्स डिस्पोजल ऑफ पोल्यूटिंग मैटर इनटू द एक्वेटिक बॉडी. किसी भी प्रकार का ऐसा कोई सब्सटेंस, ऐसा कोई मटेरियल, ऐसा कोई मैटर जो वाटर की क्वालिटी को खराब करे, पोल्यूट करे, उसको वाटर बॉडी में ऐड करने से ये एक्ट हमें रोकता है. उसके लिए कुछ प्रोविजंस है ना. सो ऑल दीज प्रोविजंस आर क्लियरली मेंशन अंडर दिस एक्ट, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1974. हियर लास्ट पॉइंट इज इट प्रोवाइड्स punishment for the violation of act. It provide punishment. Now this punishment may be in two forms. First is maybe in the form of fine or maybe in the form of imprisonment or both. So fine may be there or imprisonment may be there. So this part, what would be the fine? क्या fine होगा, कितना fine होगा, कितनी सजा होगी? This is mentioned in the section 43, 45 and 45A. According to this, imprisonment may be from 3 months to 7 months. So this is all about this act and the silent features of this act. Thank you.